So this is the one news in Bharti Airtel stock, and some fund has sold so many quantities here. You can see 3.7 crore quantities of shares has been sold on the yesterday trading session. Okay, so there is a big news happening in this stock. So let's analyze and check the technical parameter aspect. Hello everyone and welcome to the another new video। एक जैसे कि न्यूज़ हमने देखा भारतीय एयरटेल के स्टॉक में, जो आपने शुरू में देखा होगा कि एक बड़ा कोई फंड हाउस है जिसने काफ़ी बड़े स्टॉक्स बेचे हैं क्वांटिटी में, पर्टिकुलर भारतीय एयरटेल के स्टॉक के। तो उसको बाद हमने न्यूज़ में आया, रूमर्स में आया, स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी गिरा क्योंकि ओवर एक्सिस सप्लाई वहाँ पे दिख रहा है। तो अभी क्या हो सकता है? क्या स्टॉक तुरंत नीचे गिर जाएगा या फिर जो लॉन्ग टर्म उसका ट्रेंड है वो भी एकदम डिफरेंटली बेरिश हो गया है, या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म का ये इफेक्ट हो सकता है? तो अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जानने हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और आज एक नया स्टॉक के साथ एनालिसिस के साथ मैं वापस आया हूँ एक नए वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा भारतीय एयरटेल में एक न्यूज़ देखा हमने बड़ा, और उसके बाद सेल ऑफ भी देखा विथ गुड वॉल्यूम्स। तो अभी क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये न्यूज़ फ्लैश हुए और मीडिया में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हर जगह पे घूमने लगे और तो तुरंत ही क्वेश्चंस मेरे ऊपर बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस भी आए कि अभी क्या करना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए, या फिर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ और मैंने बाई किया था नीचे गिरावट की वजह से, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर ऐसे जब भी न्यूज़ आते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कि प्राइस क्या बोल रहा है। ठीक है, प्राइस क्या दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर। मतलब कि वहाँ पे अगर आप एनालिसिस करने का कोशिश करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि स्टॉक के अंदर पब्लिक क्या सोच रहा है, मतलब कि प्राइस क्या डाउन साइड मूव कर रहा है तुरंत। डेफिनेटली जिस हिसाब से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वहाँ पे हमको 2-3 दिन तो लगातार सेलिंग देखने को मिला है, बिकॉज ओवर एक्सिस सप्लाई देखने को मिल रहा है। सप्लाई जोन बहुत मतलब कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए प्राइस में हमको गिरावट देखने को मिली। तो अभी हम देखेंगे डिटेल में। मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एनालिसिस का, जो मैं हर स्टॉकवॉच एपिसोड के सीरीज़ में भी यूज़ करता हूँ, और इसमें भी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म्स के चार्ट्स भी चेक करेंगे, फिर हम मीडियम टर्म के चार्ट्स देखेंगे, शॉर्ट टर्म के चार्ट्स भी देखेंगे, और कोशिश करेंगे एक व्यू डेवलप करने का कि स्टॉक का क्या व्यू हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाले मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो हम देखेंगे एक व्यू क्रिएट करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद हम ट्राई करेंगे लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले तो लेवल्स आइडेंटिफाई इसलिए करने चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म में तुरंत ही हमको इफेक्ट देखना है, तो कोई ना कोई लेवल्स पे मार्केट या तो रेजिस्ट करेगा स्टॉक या फिर या तो सपोर्ट लेगा, तो वो भी हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन से वो लेवल्स है। ठीक है, सो चलिए स्क्रीन पे। So this is the daily chart of Bharti Airtel spot price chart. Welcome to the screen, everyone, and let me check and analyze in detail about Bharti Airtel stock after a very big news of selling of some quantity shares by some fund house. Okay, you can see this is the highest volume here also. Yes. So let's analyze on different parameters and try to analyze this stock and try to conclude what is going to be in this bias about this stock. Let's start with a monthly time frame. Before that, we can see this is a good uptrended stock since the October 2020, and we have seen a good momentum on upside. But unfortunately, we have seen a resistance zone also, and stock is exactly reversed from the resistance zone. Okay, let's analyze with higher time frame first, starting with the monthly time frame. So this is the monthly chart of Bharti Airtel, and we have seen here one high made around in 2007 around 543, around 550 zone, and that high has been not tested since the 2020. Okay, and then it has tried to cross. Fortunately it has crossed also, but we have seen a good sell off again. Here it has tried again and again sell off we have seen. So basically on a monthly time frame,
there has been a price rejection near to 550 zone or around 600 zone. Price is making high more than 600 also, but not able to sustain on a monthly basis closing. Here we have seen this is the shadow here. Okay, let me draw an arrow here. So this is a shadow here. One more, two shadows are there here. So price is making high above 600 level in the month of January and in the month of February also. But unfortunately, we have seen a selling pressure. The shadow showing a good selling pressure at higher levels. And earlier 2007 resistance was also intact because price has tried to cross, but we have seen a fall and we have seen a selling pressure again and again in this counter. Above 600 level, above 550 zone is a, this is a 50 point is a very crucial and resistance zone because price has been rejected many a times and many months here. So very aggressively we can see this is a resistance zone. And now let's focus on the pattern of the candlestick. Here is a forming a kind of doji candlestick pattern on a monthly time frame, which is not a good sign. It's a kind of reversal pattern after a good 4-5 candle uptrend. So this is basically 4 to 5 months, and it has forming a reversal candlestick pattern near to the important area of resistance because price has been rejected many times here. This is the area of resistance also, and exactly at same level forming a shooting star, a kind of doji pattern here, not a shooting star. It's a very small body doji candlestick pattern. It's a reversal sign, and low is also broken out in the next coming day. So that's not a good sign. Okay, let me show you some intrinsic fact about this candlestick for this top. It has formed a kind of doji or reversal candle at top. Here is also forming doji, and we have seen a good pressure, selling pressure on downside in couple of months. Let me go back to the certain more months back, and here it is showing a spinning candle which is also reversal candle, and we have seen a good selling pressure in this stock. Okay, let me get back to again more. Here it says forming again spinning candle, and we have seen a fall. So basically this stock, see here is forming a doji on a monthly time frame. We have seen a big fall of 30% on next month. Okay, and so that's the way we can simply say 4 to 5 times whenever the shooting star or doji or reversal candle appears on a monthly time frame at near resistance zone. In Bharti Airtel history, we have seen prices falling sharply. In previous year 2020, we have seen here also, and then again fall, and right now again forming the same pattern. So in technical analysis, we call it history repeat itself. Okay, so expecting here the same kind of performance we continue. This is a just expectation. Okay, let me give you one more insight about the volumes also. Here it has forming a doji reversal candle with a very higher volume, and we have also seen a kind of news also. So volumes were very high on this selling pressure candle, reversal candles, because of the shadow here. Okay, so ultimately in the entire month, whatever the gain happened in this counter in the month of February was initially damaged. Okay, because this is a shadow, and with higher volumes price has been damaged. That's not a good sign. Yes, and one more thing here, if you can understand the momentum indicator RSI, it's showing a negative divergence. Here also divergence and market fall. Here also again divergence. So price is making new high, but RSI is not. So it's a kind of multiple divergence on a monthly time frame, which is showing a kind of pause in this uptrend. Yes, the reversal candlestick pattern, the pause on a higher time frame. That's not a good sign for the long-term investor as well. Okay. So these are the few facts on the monthly time frame. Now let me discuss about analyze the weekly time frame on the Bharti Airtel chart. So that was a very few important nuggets which I have shared with you. And here it is forming a kind of double top formation, okay, on a weekly time frame, because of this is the important area of resistance. So this is a one top, market fall, bounce back to same level, and again making a top here, and market slightly fall. So this is a double top formation here.
Okay, so neckline is very far here. Uh, okay, on weekly time frame, but exactly we have seen a kind of good resistance here. So that's not a good sign. So medium term time frame showing a strong resistance intact. In the weekly time frame, we have seen a good momentum on upside from the month of October 2020. We have seen a good uptrended move. Since last couple of months, in last 2 months, we have seen a kind of sideways in this stock. And let me show you a trend reversal with the help of trend lines. So this is basically this is a very steep trend line. The market is going very very fast on upside, and then finally it has broke the trend line here. So this trend has been uh, end here. Yes, so maybe kind of expecting a sideways move or maybe some kind of declining move. That may be the two possibilities in this counter. Okay, and here with this trend line breakout, a big body black candle, bearish candle with higher volumes, which is not a good sign. Though it has some kind of support at this moving average. That's why we have seen a good bounce back in this candlestick here. But the week has been not over yet. Okay, this is the ongoing week, so we need to wait. So this is the analysis on the weekly part. Now let me back to the daily chart, which is our short term chart. So here, by looking at this from the month of January, it has showing a kind of consolidation and purely distribution has been occurred here with the volume activity. Yes, and while on the support broke out with higher volumes, that's not a good sign. And big body black candles are coming up at support zone and breaking up support at least. And if you can observe, let me turn to the line chart. This is the double top pattern again here. And in this case, the double top neckline also break out somewhere here. So that's not a good sign here. After breakout, this is a side of kind of consolidation again. Okay. So this is a bearish, this is a reversal pattern, price pattern breakout up here. So basically not a good sign for the bulls, for short-term traders as well. And if I can draw a simple trend line here also, it has also breakout somewhere here with higher volumes, trend line breakout with big body black candles, the bear candles. So these are the few reasons. Okay, and volumes are increasing on a breakout level. That's not a good sign. Near to a big resistance, even of this last year higher is also forming a resistance here. See, this is the area of resistance, and exactly market start falling from this level again. And here also it's try to go down and sideways and then again move down. So this resistance is very very crucial in a shorter time frame. It's around 600 610 level. Okay, so that's not a good sign. Double top formation breakout appears on a downside, neckline also breakout. Okay, let me show you some more. RSI was trading between 4060. Now it's crossed the 47 on below side. So there's a bear territory. That's not a good sign again. And let me show you the volatility. So since last 1.5 month, 2 month, the stock was in a consolidation, kind of a distribution, volume distribution, and the break of this Bollinger Band on a downside. So this is the walking on the bands on a daily time frame, increasing the volatility of this stock on a downside. Yeah, so that is again not a good sign for the bulls for the shorter time frame. Yes, importantly, this moving average also breaks out somewhere here. The horizontal support, this neckline is also breaks out on downside. So overall, all the parameters of technical analysis showing a kind of bearish signals on the various time frames as well. Okay, now let me discuss levels. Now you have slightly view and bias that this stock is no more bullish right now, at least for the short term. Yes, short to medium term, we are not expecting a good bounce in this counter. With the help of analysis which we have done, we can conclude that. Now, most of you are thinking about what are the levels. If we are long-term investor, what are the levels we should look at? Or if we are a short-term trader, what are the levels we can look at for the resistance zone and the support zone? So now let's discuss with the few more techniques. So
this is a good uptrended move, and let me take Fibonacci retracement here to find out the important area of support. So right now it's at 38% retracement level. Stock is near to the 38% retracement level. By looking at this pattern, we can expect this much of height near to this lower level also. From this point to this neckline to this high, we can expect downside as well. Okay, so which comes around here, this 50% retracement is around 505, 508 somewhere. Okay, so and 61, the golden ratio comes at 480 zone. So 505, around 500 level and 480, these are the two support zone after this. Okay, and let me show you one more advanced technique. This is a kind of advanced technique, I'm using it, which I have not posted in any of the video. So here is also 161% comes at 500 zone. So that's again good sign. So retracement level also comes to the around 500, 505 level, 508 level, sorry. And the extension also comes at 161% near to 500. So ultimately the 500 level will be a very crucial level for this stock as a support zone. Once it gets breakouts on a downside, by looking at the price activity and the volume activity, if this breaks out on a downside, we can expect move to the around 480, which was this move once, which golden ratio. So 500 is the first support zone, then 480 is the next support zone. Okay, and now let's discuss the part of resistance zone. So we have seen this is the kind of a doji candle and again shadow candle. So ultimately here is a support zone. We can, this is a consolidation slightly. The big candle here making a low somewhere here, and this low has not been broken out since so many days. Okay, and finally it gets break out here. So let me mark this. And we have seen exactly some pullback, and the selling again started from this zone. Let me mark the high here. So this 575 and this candle high 586. So 575 to 586, almost 10 point is a very crucial resistance zone. The exact selling pressure, the sellers have started selling this stock from this level. So this could be a very important stiff resistance for Bharti Airtel in next couple of months. Okay, I'm talking about couple of months. In short term, we can expect this moving average as a resistance, but in medium to long term, we can expect this is a stiff resistance 575, 585. Okay, this 10-point band. In short term, we can expect this moving average. When moving average keeps changes by price closing of the price. Okay, so I'm not giving here any kind of buy or sell recommendation. I'm just trying to analyze whenever the news appears onto the particular stock and what will be the impact on that. Okay, so let's meet on the outer video. सो आई होप आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, और जिस हिसाब से हमने देखा ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो जो हमारा एक अप ट्रेंडेड मूव था पिछले कुछ महीनों से, और हमने देखा 2007 से जो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे पास एक 50 पॉइंट का बैंड है, 550 से 600, 610, 50 टू 60 पॉइंट का एक बैंड है जो एक रेजिस्टेंस का लगातार प्रूव हो रहा है पिछले 10-12 सालों से, उससे भी ज़्यादा हो गए, और उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा मार्केट। फिर हमने देखा कि हायर टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न बार बार रिपीटेशन दिखा रहा है, और वही इस बार भी एक हमको देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक का जो एक ट्रेंड था बुलिश, एटलीस्ट वो तो अभी कंप्लीट हुआ है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स है उसको थोड़ा बहुत और वेट करना रहेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि जो इंटेक्ट ट्रेंड था वो एटलीस्ट चेंज होते हुए यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अभी कंप्लीटली रिवर्सल नहीं हुआ है, बट जो हिस्ट्री हमने देखा उस हिसाब से हमको लग रहा है कि वो रिवर्स हो सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर बात करें हम, मीडियम टू शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर्स है उनको ध्यान रखना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहते हैं तो आप लोअर लेवल्स पे कोशिश करिए उसको बाइंग करने का, ठीक है। जैसे कि लेवल्स हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी किए हुए हैं, सो लगा तुरंत ही उसमें एंट्री मत करिए, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल्स हमने आइडेंटिफाई किया कि एक प्रोबेबिलिटी है कि 500 के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। जरूर नहीं है कि वहाँ मिलेगा ही आपको, नीचे गिरेगा ही वो स्टॉक।
काफ़ी बार वो एक ही दिन में फ्लिप करके वापस भी चला जाए, तो वो लेवल्स तो आ ही गए बट आपको मौका ही नहीं मिला। काफ़ी बार वो लेवल्स ब्रेक करके और नीचे भी चला जाए। तो मार्केट है, प्रोबेबिलिटी पे होता है पूरा, और यहाँ पे लेवल्स का काफ़ी बार रिस्पेक्ट होता है, काफ़ी बार नहीं भी होता है, बट वो हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं लेवल्स, अगर हमको उसमें नया पोजीशन बनाना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है उनके लिए जो रेजिस्टेंस जोन मैंने दिखाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो शुरू में 550 के करीब है, 550, 650, 550 से 560 का जो रेजिस्टेंस है वो ध्यान में रखिए, ठीक है। मार्केट इस स्टॉक में अभी देखेंगे तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मेजर जो पैटर्न ब्रेक हुआ है उसका टारगेट मेट हो सकता है आने वाले कुछ टाइम और कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। सो ये पूरा व्यू था मेरा एक भारतीय एयरटेल के बारे में। मैंने यहाँ पे कोई भी बायस नहीं रखा कि शॉर्ट सेलिंग ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी रेंज काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के ट्रेडर होते हैं। काफ़ी लोग शॉर्ट टर्म के मूव ही को ही एक फोरकास्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के मूव को ही कैप्चर करते हैं, और काफ़ी इन्वेस्टर्स होंगे जो वेट करते हैं बड़ा डिक्लाइन के बाद, एक बड़ा चंक बाय करते हैं और वेट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। सो सबका माइंडसेट अलग होता है, सब ट्रेडर्स अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैंने अपना एक अनबायस्ड व्यू रखने का कोशिश किया है यहाँ पे भारतीय एयरटेल में, विथ ऑल द लेवल्स एंड क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। सो अभी भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सही ही होगा, ठीक है। ध्यान में रखिए एनालिसिस में से। आशा रखता हूँ कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। जब भी ऐसे न्यूज़ आते हैं, जब जस्ट चार्ट को निकालिए, चेक करिए और कोशिश करिए एनालिसिस करने का, आपको बहुत सारी चीज़ें वहीं से पता चल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।